अवेलेबल नहीं होते। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीब खान है एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ स्टार्टअप ग्रांड चारसद्दा। तो आज हमारा फर्स्ट इवेंट है और इस फर्स्ट इवेंट में हमारे साथ आज ज्वाइन किया है एक बहुत ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर ने, बहुत ज़बरदस्त गेम डेवलपर ने और टेक मीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हिलाल खान साहब ने। हिलाल खान साहब से कुछ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, काफ़ी ज़्यादा हम सीखेंगे कि सब कुछ के ये इन्होंने सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करियर किया, उसके बाद ये आईटी की फील्ड में आए, आईटी की फील्ड में कैसे आई है, फिर उसके बाद गेम डेवलपमेंट में कैसे आए और फिर इन्होंने जो ये आईटी फर्म स्टार्ट किया है एपटेक मीडिया, इसकी तरफ ये कैसे आए और माशाल्लाह से इनको गेम डेवलपमेंट की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिली है। तो इस पे यहाँ तक ये कैसे पहुँचे हैं, तो हिलाल भाई। Assalamualaikum, thanks for having me. Thank you Areeb for the introduction. ये सारी बातें जो आपने बोली है वक्तन फ़ौक्तन इंशाल्लाह हम इसको आगे चलते जाएंगे। जिस तरह इस सेशन का नाम है ग्रोइंग इकोनॉमिकली विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। As we know, this is the age of information technology and हर दूसरी तीसरी कंट्री को जो हम देखते हैं they are economically strong, so IT plays a very vital role in their economic progress. Especially if we looking in our neighborhood India, a very good example of growing economically with IT. If we see Vietnam, if we see Philippines, these are the countries with which we whom we can relate. उसके अलावा हम बड़ी countries की तरफ जाते हैं, US, China, UK, but obviously IT played a very vital role in their development. बट अगर हम अपने जैसे कंट्रीज को भी देख लें तो भी उनकी अगर हम आईटी एक्सपोर्ट्स देख लें, उनकी आईटी इंटरवेंशंस इन देयर इकोनॉमी देखें, so they're like they played a very huge role and a very high impact on their economy. जो भी इस फील्ड में होता है, normally youth is involved because the technology is relatively new to other like the industry is relatively new to other industries. So most of the youth are involved, and I would say the skilled youth and educated youth is involved in uplifting this industry. Information technology industry relatively covers approximately every sector of the society. Now, this is not only the internet. Now, like this industry penetrated in almost every field and every department and every industry which we go through in our life, like either it's health sector or the finance or banking or like every other field that we see, IT is there, digitization is there. So from today's session, we will see like how we as a nation and in Pakistan, how we can grow economically. So that's like the main agenda for today's event. Like for my introduction, I am the CEO of Epic Media and started my in 2014. Then shifted to project management and those stuff in the marketing in 2015 and 2016. I joined Epic Media along with my other friends. And we started this game development studio first. For the first 2 years, it was just a game development studios. Then we were adding like other things like app development, web development, digital marketing, because those were also a specialty of the team. So we started it. At first, it was just a product-oriented company working on our own products. But as we grew with time, we have also added like the field, like other domains, like providing services, doing partnerships, publishing with other companies, and also their stuff. So there's like a short journey of my career.
जी, थैंक यू सो मच हिलाल भाई। अच्छा अभी जैसे आपने बात की है अभी कि तकरीबन जिस फ़ील्ड में भी हम देखें, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन की कोई फ़ील्ड हो, हर फ़ील्ड किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी लाइन में जो है वो आईटी से ज़रूर मिल रहा है, ठीक है? बिल्कुल। तो ये तो आपने बिल्कुल सही बात की, इसके मैं भी इसको एग्री करता हूँ इस बात पे। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जिस तरह आपको भी पता होगा और मैं भी कब से काम कर रहा हूँ आईटी की फ़ील्ड में, मैंने आज तक इतनी ज़्यादा कंपनीज़ के साथ काम करके, इतनी ज़्यादा कुछ करके, आज तक ये नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि जी इतनी ज़्यादा एजुकेशन चाहिए इसके लिए, आपके पास इतनी डिग्रीज होनी चाहिए, मगर फिर भी हमारे हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनको काइंडली आप एक मैसेज दे दें कि जितनी जैसे आप अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आप गेम डेवलपमेंट में आए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेम डेवलपमेंट के साथ इतना कोई काम नहीं है, ठीक है? लेकिन अब मैंने अब मैट्रिक की हुई है, लेकिन किसी को क्या पता है मैंने क्या किया है, मतलब अब हर कंट्री से मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैंने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ काम किया, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ के साथ, काफ़ी ज़्यादा कंपनी हमारे क्लाइंट्स हैं, सब कुछ मैंने किया हुआ है आईटी की फील्ड में। लेकिन काइंडली आप ये बताएँ कि ना हमारे पेरेंट्स को कि जो किसी ने भी इस फील्ड में आए ना, तो काइंडली अपनी स्किल्स जो हैं उस पे आप काम करें, बजाय कि आप लग जाएँ तो पहले आप बीएस करें, उसके बाद एमएस करें, फिर डिग्रीज़ करें, फिर स्टेजेस पकड़ा के जाएँ, आप नौकरी ढूँढें और नौकरियाँ मिले भी तो वो 25-30 हज़ार की, इससे ऊपर ना हो। तो इसके बारे में काइंडली आप कुछ बताएँ। I have a very balanced opinion on this because अगर हम देख ले तो हमारे इकोसिस्टम में दो एक्सट्रीम्स बन गए हैं. One is completely education and one is completely skill. I have a very balanced opinion on this. Like I support education uh, as a career, as starter of your career also along with skills. Like a mix of both. I think because when we give examples, this is a bit lengthy question. I will take some time on this because this is, in my opinion, this is very important to clear this point. I think both sides, both the parents and the mentors and the guides who focus on education and also the youth who only want to focus on skills. मुझे लगता है like both are at some fault in like their own um, like in their own opinion वो थोड़े से वो extremism वाले उस पे चले जाते हैं, साइड पे चले जाते हैं. So I will explain this point a bit more. When we give example of like only focus on skills and not education, we give the examples of okay, Steve Jobs, he was a dropout, Mark Zuckerberg, he was a dropout, Bill Gates, he was a dropout. But what we are not giving the examples of like the co-founders of Google, Larry Page and Sergey Brin. I don't know if it's like the masters or the PhD thesis of them that they turned into Google. Also, अगर हम उसकी एग्जांपल ले लें, Elon Musk की एग्जांपल ले लें, like वो he did his I think PhD in physics and something like that. So like this is like a mix. It's not like अगर कोई बंदा education करेगा तो उससे skills रह जाएंगी. You should keep like a very beautiful and pretty balance of the both education of your and your skills. Along with your education, pursue the skills. Yes, and after the skills, if you want to build your career around your skills, that's like a very I will say beautiful journey along with the hardships. As you know, like entrepreneurship and freelancing all has their own struggle and hardships. Like it's not something like normally I hear this intense a lot, that be your own boss and do not work from 9 to 5 and something like this. They tell you do not work from 9 to 5, but what they don't tell you is like work 24 hours. You will not have any routine or something like this. So I feel कि अपने pros and cons होते हैं. Education is not something like जो कि अगर से आपने सिर्फ अपने career और job के लिए education करनी है, so it's not something like for the right approach. Education like मैं समझता हूँ कि university is the first place जो कि आपको जो कि आपकी networking कराती है अपने like-minded लोगों की. I had approximately 140 or 150 batch mates in my university. So as I was from engineering background, so मैं उसमें देख लूँ तो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की, CS के बैकग्राउंड की, तो सारे दोस्त अगर वो सारे अगर मेरा एक नेटवर्क है, तो उसमें से 50% मेरे यूनिवर्सिटी का ही नेटवर्क मेरे साथ आगे आया है. अगर मैं अपनी कंपनी की मिसाल लूँ तो वन ऑफ माय को-फाउंडर, ही वाज माय क्लास फेलो इन यूनिवर्सिटी. Two were the graduates of computer system engineering. One was my senior. So like वो सब वो एक यूनिवर्सिटी में आपका वो नेटवर्क बनता है
और उसी नेटवर्क को आप आगे लेके चलते हैं। ऑल्सो यूनिवर्सिटी वर्क्स ऑन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अक्सर हम कहते हैं कि नहीं हमारी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें नहीं होती, सो इट मीन्स कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में वो चीज़ें as a part of co-curriculum activities increase करना चाहिए, बजाय कि we criticize the education or something like that. So in my opinion, both our youth and parents should understand this point that both education and skills both are equally important. And अपने point को justify करने के लिए अगर हम 2-3 लोगों के examples लें, जिस तरह मैंने बोला कि मार्क ज़करबर्ग ड्रॉप आउट, स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट, बिल गेट्स ड्रॉप आउट, सो हम दूसरी साइड पे देख लें कि एलन मस्क पीएचडी, लैरी पेज PhD and a lot of other guys जिसको हम देख लें। अच्छा हम अगर उसमें से देख लें तो आज भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन ऐसा की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, they use university research to build their companies of course. So like I will say both are equally important. यूथ को समझना चाहिए कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, अपार्ट फ्रॉम लाइक ओनली अर्निंग मनी, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। एंड हम उसकी एग्जांपल लें, अगर हम स्किल्स की वो कर लें, बात कर ले, तो पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आजकल का जो ज़माना है उसमें 4 ईयर डिग्री के लिए वेट करके फिर कोई काम स्टार्ट करने से बेहतर है कि लर्न अ स्किल इन 2-3 मंथ्स एंड स्टार्ट। सो दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज। अच्छा हिलाल भाई, हमें पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री के बारे में बताएं। जिस तरह पाकिस्तान अब आईटी में, जिस तरह मैंने अपने पहले ही बताया कि अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, तो पाकिस्तान में जो अब फ्रीलांस मार्केट प्लेस में देखा जाए तो पाकिस्तान अब फ्रीलांसिंग में दुनिया के चौथे नंबर पर है। इसको अगर हम और ऊपर लाना चाहें, ठीक है, तो हमारा जो यूथ है वो आए इसमें, वो काफ़ी ज़्यादा इस पे काम करे, हमारी कम एज में फ्रीलांसिंग की तरफ आए ताकि वो कुछ अर्न करे और पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो, ठीक है। और इस तरह मतलब अब बताएं कि इससे हम और किस तरह हम पाकिस्तान को और किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, और पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ और कैसे हो सकती है, ताकि दूसरे दूसरे मुल्कों को अगर देखा जाए तो वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। इस तरह आप चाइना देख लें, चाइना पाकिस्तान के बाद इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन अब चाइना कितना ऊपर चला गया और पाकिस्तान उसके बराबर कम है। तो इसका काइंड इस पे थोड़ा सा वो डालें कि पाकिस्तान क्यों नीचे रह गया दूसरे मुल्कों से। वेल अक्सर इसमें से दो बातें हैं। कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं लाइक वी हैव $2 to 3 billion ऑफ आईटी एक्सपोर्ट्स, तो कुछ लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। It's like a very optimistic approach to celebrate your success. If we were not only on $1 billion mark like 2-3 years ago, and now we have crossed like $2 to 3 billion yearly in IT exports. And like अगर हम उसकी complete figures को देख लें, so I suppose इससे भी ज़्यादा होगा। Like a couple of weeks ago, I was in a webinar, and उसमें चेयरमैन PSCB उस्मान नासिर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की थी, एंड आई लव दैट कि वो आप ऑप्टिमिस्टिक होने के साथ साथ उनमें एक वो जो फ्यूचर विजन वो खुद अपने लिए फोरसी करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि $2 billion, congratulations on $2 billion exports for this, but जो उसने बात की है कि we should be ashamed of everything, like of every single penny listed $20 billion. Because अगर हम देख ले तो $180 billion, India $40 to 50 billion, Philippines, same goes for Vietnam, and like a lot of like success stories which we see around IT. So अगर हमारी growth हो भी रही है तो it's like a very positive thing, but जो हमारा विजन है, जो हमारे गोल्स हैं, हमें उनके हिसाब से उसको कंपेयर करके ये नहीं दिखना चाहिए कि ओके हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है, वी डिड नॉट डू एट आवर फुल पोटेंशियल टिल नाउ। अगर अपने पॉपुलेशन, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ, IT graduates in our youth, अगर उनके figures उठा के देख लें, so we are much better than other countries. Like we are better than Turkey in those numbers. We are better than the countries like Vietnam, Philippines, and something like those countries. But the thing is, यहाँ पर जब हम कहते हैं ना कि skilled, हम यहाँ पर skilled वो skilled होता नहीं है, इसको international market में skilled कहा जाता है। Normally what we do is like 2-3 months or even 6 months or even 1 year to be experienced company. I think that's it. It's not experienced in international market. International market, you should keep up with the quality. You should which the international market demands. So what or and also हम बड़े like I'm not criticizing anyone, but like हम बड़े थोड़े तो खुश होते हैं. So I think that's the mindset
बस्टर नहीं होता, वो एक अजीब जी, सी एक चीज़ है कि लाइक मैंने कहा ना हम सेलिब्रेट करते हैं $2 बिलियन के आईटी एक्सपोर्ट्स को। जैसे उस्मान नासिर साहब ने बड़े खूबसूरती के साथ कहा था कि मतलब एनीथिंग लेस देन $20 बिलियन हम उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लाइक हमें उसको उस मार्क तक लेके जाना है। व्हेन एंड हाउ, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व, improving the quality of graduates, improving the quality of trainings, improving the mindset कि हम किस mindset के साथ उसमें जाते हैं, market में जाते हैं. A lot of people when they ask me how I can make a profile on Fiverr or how I can make my profile on Upwork or how can I get clients, normally companies. So my answer to them is always like, before going into the Fiverr and Upwork.com, please go to Udemy.com, Coursera.com, Khanacademy.com and such stuff like that. हम ये वाला step भूल जाते हैं, we go to the next step. So हम अक्सर हमारे अक्सर जो कंपटीशन होती है, सो मतलब मैं कहता हूँ ओके अरीब इज बेटर देन हिलाल, सो हम कहते हैं ओके अरीब इज डूइंग वेल, बट फिर से अरीब की कंपटीशन हिलाल के साथ नहीं है. अरीब ने अगर हिलाल को बीट भी कर लिया तो इट्स नॉट अ कंपटीशन कि उसने जीत लिया, ही हैज कंपटीशन विद द होल वर्ल्ड ऑफ with the whole online community of freelancers, और उसमें उसने खुद को establish करना है. So हम अक्सर बड़े लोकली खुद को उस जाल में फंसा देते कि ओके मैं इस कंपटीशन में आगे हूँ, हमारा ये कंपटीशन जा रहा है, जो कि वो केस है नहीं. हम बड़े ग्लोबल, और इस फील्ड की सबसे खूबसूरत बात यह है कि लाइक द मार्केट इज ओपन फॉर एवरीवन. इज नॉट समथिंग लाइक दैट ओके I cannot submit a tender in US for a government project. No, it's not like that. It's like open platform for this. If you can do a job, you will get the job. You can compete on price. You can compete on quality. You can compete on a lot of factors like how you manage your projects and also all that stuff. So there are a lot of things on which you can compete, but your competition is not local. Your competition is not with any freelancer or with any company of Khyber Pakhtunkhwa or with the company of Peshawar or even with the company of Pakistan. Your competition is global, so you have to raise your standards to that level to compete on the international level. अच्छा हिलाल भाई, हमारे वो व्यूअर्स जो कि चाहते हो कि हमने गेम डेवलपमेंट की तरफ आना हो, हमने गेम डेवलपमेंट पे काम करना हो, तो एक आम आदमी ने, एक सिंपल आदमी जिसको गेम डेवलपमेंट के बारे में कुछ ना पता हो, कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? उसने सबसे पहले गेम डेवलपमेंट आने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें जरूरत होंगी, वो क्या क्या चीज़ें उसको सबसे पहले सीखनी पड़ेंगी, इसके बारे में बताएं. Okay, I have been like a few fields, जिसमें app development आती है, web development आती है, digital marketing आती है, game development आती है. Relatively, I rate game development as a bit more hard to learn skill. Especially अगर आप programming भी देख लें तो programming for web, programming for app, it's relatively simple in the game, because in the game you have to take care of a lot of things. Also, game development is not something like okay you code a game and okay that's the game. No, you have to take care of the art, you have to take care of the design, like how the flow will be, and like so अगर आपने game development की तरफ आना है, so first you should have like extraordinary programming skills. अगर आपने सिर्फ as a coder programming the game उसकी तरफ अगर आपने आना है, तो you have to be like very extraordinary in coding, like I will say exceptional. Then you can survive and prosper in this where industry of the gaming. दूसरी बात, आप में gaming sense हो, gaming sense like you should be a game player also, like आप games खेलने वाले क्षमता कि आपको sense हो गया how you play games, and then you come to that okay I want to design something like this. This is like something I am only saying that okay this is a computer science related thing. दूसरी चीज़ जो कि उसमें है, अगर आपने गेम के आर्ट की तरफ आना है तो उसमें दो तरह के आर्ट्स होते हैं, 2D आर्ट, 3D आर्ट. तो आपने 2D आर्ट की तरफ जाना है तो उसके अपने टूल्स एंड स्किल्स हैं, अपना वो like for the apps and for the flows, I normally go for thing with my when someone asks me if you're a designer or not. So I normally design those things, but I normally design not on tools, but I normally say is like aesthetically I'm a designer, not the tools wise. I'm a designer. So you should be able to understand the design trends, how the users will
get engaged to the game. Like अपने game को मतलब गेम की engagement कितनी होगी, गेम के साथ यूजर किस तरह interact करेगा. अच्छा अगर आपने 3D की तरफ जाना है तो 3D modeling will it be played on a mobile device or not, or like वो सब चीजें. So like I will say there are tens of other things which which you have to take care of if you're into the game development rather than the apps and the web development. Uh, so if you want to go into the game development, the easiest thing is in which there is a lot of community support also. Unity 3D software. You can start with the Unity 3D. Go for any tutorial, be it on the Udemy or YouTube or anything like that. And when you learn the skills, like 2 or 3 of like your sample projects, then apply for an entry position in a company. Like it's not something like you don't know anything about game development or don't know anything about Unity 3D and you apply for. Also जो एक चीज मैंने देखी in the game development industry, normally जो other industries है like जो other fields है like web and app या marketing, उसमें आपके हर मंथ की एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं. लाइक यू आर 1 year experience, so everybody knows that okay, 1 year experience come to this. Game development, the initial growth is a bit slow. Like for the first 3 or 4 years, your growth will be a bit slow, like career-wise, salary-wise, grooming-wise, everything. For first 3 or 4 years, your grooming will be a bit slow, but after that, there will be like an exponential growth. So you will get ahead of your other friends who are in the web and app, but your growth will be slow for initial years, and then you will cross them. That's what my observation is. But you have to like very patient in this industry. Okay, Lal bhai, I also hear that you mentor startups at BIC, I am Durshal Peshawar, and Code for Pakistan. So, can you tell me a little bit about startups? Yeah. Well, startups. I think if we go back to when I was graduated, like 2014, this startup culture was not like that much. Normally in our country, there were like a very few startups, and not these NICs were not there, Durshals were not there, the other incubation centers were not there. Then uh, a lot of people took this initiative to make their like the Plan 9 and Plan X and the Arpa Karim Tower, then like the Nesta in Karachi and also the NICs and then the Turshals and like it became like a chain of incubation centers, and we saw a boom in the startup industry in the last 2-3 years, 4-5 years I will say. एंड उस टाइम पे जब उसकी इनिशियल 2-3 साल हो रहे थे तो सब कह रहे थे लोग कि स्टार्टअप इंडस्ट्री कुछ कर रही है कुछ नहीं कर रही है. अभी इसी साल हमने देखे लाइक हम कितने जिस तरह एयरलिफ्ट ने फंड रेज किए, जिस तरह और कंपनी ने फंड रेज किए, चीते रेज, सेहत कहानी, लाइक यू कैन नेम लाइक अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जिसमें स्पेशली 2-3 सालों में अभी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं. दे सी अ वेरी सीरियस पोटेंशियल इन दिस रीजन. एंड पिछले दिनों पाकलान जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके जितने भी इन्वेस्टर्स आए थे उसकी उनकी वीडियोस में देख रहा था. दे वर लाइक दे हैव लाइक वेरी positive attitude towards investment in Pakistan and how Pakistan startup ecosystem will grow. So उसी के लिए I normally visit these which I mentioned earlier also, like mentoring startups normally on the प्रोडक्ट डिजाइन और लाइक जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है नॉर्मली मैं जब भी इस तरह की किसी ट्रेनिंग में जाता हूँ, वन थिंग आई से दैट व्हाट आई विल से इज माय एक्सपीरियंस. यू कैन एग्री और यू कैन डिसएग्री, मे बी आई एम रॉन्ग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि startup journey I will say is like a very zigzag motion, so it's a bumpy road, so you cannot tell anybody that okay I went through this journey and this was my journey, so your journey will be exactly like the same. Their journey might be different. So you like for the mentors also, I advise this thing like you should not impose your ideas or you should not impose your opinions on the startups. Let them do what they think because it's their vision.
you can only mentor them. Okay, do this, do that. This is the right strategy. This is the right strategy. But if you cannot convince them to do that, then please do not impose that thing. Secondly, what I propose for the startups, um, that get mentorship like from the very right person to mentor you. Like like if I'm in the game development and I am mentoring a startup um, who are working on fintech or health technology or something like this. So I'm not the right person. Maybe the um, CEO of Sehat Kahani or Marham or Dawai, they are the right people to mentor them. So normally if they're asking about the technology, so I'm in a technology field, so I can answer those questions. But if they want to like ask for like very specific uh, like they seek a very specific mentorship related to their own field, then they should go for like the right mentor who can, like if you are in freelancing and you ask for some guidance from a person, so better you ask from a freelancer who went through the same journey as you are. Then I think you will get the best mentorship. Well, the other people who also give you advices, they're also good because I said like that in the journey 40, 50 or 60% of the part is normally the same, क्योंकि 30-40% होता है वो normally different होता है. If you want some specific mentorship, so go for the mentorship that's like very specific to your field. अच्छा अच्छा लाल भाई, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं सॉफ्टवेयर हाउस एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के, तो ये बताएं कि इस एसोसिएशन का काम क्या होता है और ये एंटरप्रेन्योर्स और सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए किस तरह इस पे काम किया जाता है, ये हमें बताएंगे. ओके वेल, हमने इधर एक एसोसिएशन बनाई थी सिर्फ कंपनीज की, जो कि इधर आईटी पार्क की कंपनीज आई, आईटी पार्क से बाहर पेशावर की जो कंपनीज थी. वी हैड आल्सो सम कंपनीज फ्रॉम एबटाबाद आल्सो, जिसमें हमने सिर्फ कंपनीज को लिए तो एसोसिएशन बनाया था. वर्क लाइक इनके जो मसले हैं या इनकी जो चैलेंजेस हैं या इनके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम वो आइडेंटिफाई कर सकें. अपार्ट फ्रॉम दिस, आई एम आल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन पख्तूनख्वा, जिसमें हमने सिर्फ कंपनीज को नहीं बल्कि कंपनीज, फ्रीलांसर्स, आईटी स्टूडेंट्स, आईटी ग्रेजुएट्स, एवरी पर्सन हु आर वर्किंग इन द आईटी इंडस्ट्री, हमने उन लोगों को उसमें शामिल करने की कोशिश की. आई थिंक यू आर आल्सो प्रेजेंट इन वन ऑफ आवर इवेंट. हमने ग्रैंड आईटी मीटअप किया था विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ पख्तूनख्वा. नॉर्मली वी कॉल इट ITAP. So हम उसमें हमारे ये होता है, उसके अंडर हमारे 3-4 प्रोग्राम्स ऑलरेडी in progress हैं. We went for a Tarun apprenticeship program, you know, Tarun like the bond. So what we did, like we linked apprentices with the companies for 6 months internship, and we were also paying monthly stipends to the apprentices in the support of Hello Tassos Inter Corporation Market and Employment Program. उसके बाद हमने उसका second batch start किया था, जो कि वो still in progress है. We have also started Tarun freelance program, under which in the first batch we are training 180 students of Shaheed bin Mohammed University in different fields like web development, app development, video and animation, graphic designing, digital marketing, virtual assistant, and such type of courses. So this is association जिसमें सारे members मिलके इस ecosystem के development के लिए ही काम करते हैं. It's all about information technology, and our main focus under ITAP is the economy part of like the IT, because in IT we have like a lot of things जो कि हम उसको consider कर सकते हैं, like how to digitize things and how to bring the IT revolution and digital transformation, like the e-governance and something like that. But जो हमारा main इसमें target है, that's the main focus is on the economy, how to build companies, how to build financiers, how to build like the IT ecosystem which support us economically. अच्छा लाल भाई, मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है जो कि मैं खुद कब से सोचा था कि आपसे मैं ये खुद पूछूं, लेकिन
आज ये इवेंट हो गया तो चलिए मैं इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। वो ये कि जब मैं इस फील्ड में आया और जब मैंने अरीब इनोवेशन स्टार्ट की, तो शुरू में मतलब मैं अगर क्लियर बताऊँ तो जब मैंने इस फील्ड में आया तो तब मेरे पास कोई मेंटरशिप नहीं थी, कोई ऊपर कोई मेरा बंदा नहीं था जो कि मुझे सिखा सके। मेरे पास एक ही चीज़ थी, वो था यूट्यूब। यूट्यूब से सीखना, यूट्यूब से मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, यूट्यूब से मैंने वर्डप्रेस सीखा, यूट्यूब से मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी। ये तीनों चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी और फिर मैं फाइवर पे मैंने काम स्टार्ट किया था। ये बात तकरीबन आज से 5 साल पहले की, ठीक है? तब मैंने ये काम स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने अपनी दूसरी कंपनी बनाई थी एके डॉट द फ्रीलांसर्स के नाम से। फिर उसको हमने कन्वर्ट किया था अरीब इनोवेशंस में। तो जब मैं उसमें आ रहा था तो तब उसमें अगर मैं आपको ये बताऊँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किलात आई हैं। वो ये कि मतलब हम अगर किसी भी स्टार्टअप में कोई मेंटरशिप लेनी होती थी, तो वो कहते थे कि भाई अंडर 18 है आप यहाँ पर नहीं आ सकते। हम जिनके पास सीएनआईसी हो तो उनको हम ज्वाइन नहीं करवाते, आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, ठीक है? फिर एससीसी पे जाए तो एससीसीपी वाले कहते हैं जी आप अंडर 18 है तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। इसके बारे में कांदी बताया कि एससीसीपी हो गया और ये जितनी भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्या ऐसा सीईओ जो अंडर 18 हो वो क्यों नहीं रजिस्टर हो सकता? अब मैं पिछले 2 साल से लगा रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला। Well, I think these are the government policies जो कि वो like बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये डिसीजन लेते हैं। Like you are one of the case जो कि you want to register your company and when you are under 18, I don't know what's the policy of SCCP for this, but वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ये डिसीजन लेते हैं। क्योंकि if you are under 18, so आप पे बहुत सारे laws implement नहीं होते। So what if some mishap happens in the company? So what will they do and something? I don't know, like exactly why do not allowing this, but I think there are a lot of factors, because your case is very individual case और इस तरह के individual cases के लिए I don't think कि वो उन factors को neglect करेंगे जो लोग इसको misuse कर सकते हैं, making companies in the name of under 18 people. I think this will be misused and like बहुत सारे factors इसमें ऐसे आ सकते हैं कि ये इस चीज़ को exploit किया जा सकता है and so in your case you can go for a partnership with your father or with your mother and make a company in SECP and something like which works like हम IT के लोगों को यह है कि हम कहते हैं किसी तरीके से वो चला लो, काम चला लो। So अगर आपने अपना काम चलाना है so you can make a company and your name of your father and name of your mother and something like that and then go for the but in the freelancing market, I think there is no such restrictions, so you can work there and जब आप उधर इतना grow कर जाएंगे, so I think तब तक या तो इस पॉलिसी में कोई चेंज आया होगा या आप इंशाल्लाह 18 साल के हो जाओगे फिर you can make your अच्छा, वैसे मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। वो ये कि अरीब इनोवेशन से पहले जो मैं एक फ्रीलांसर जोन पे मैं काम कर रहा था, वो सारे तो मेरे उसके सारे जितने भी फॉर्म्स थे उसके एफबीआर की रजिस्ट्रेशन थी, सब कुछ मेरे फादर के नाम पे था। और उसके बाद एफबीआर ने अंडर 18 के लिए जब स्टार्ट किया था, अब तो अंडर 18 रजिस्टर करवा लेते हैं एफबीआर में जितनी भी कंपनीज है ना, वो अंडर 18 रजिस्टर करवाने देते हैं। तब तो वो मेरा अपने नाम पे रजिस्टर्ड है और जो बाकी अकाउंट्स वगैरह वो सब कुछ मेरे फादर के नाम पे रजिस्टर्ड है अभी तक। तो मतलब मैंने कहा ना कि अगर आपके फादर के नाम पे है यू आर ओके विद इट, सो बिकॉज अगर हम इकोनॉमी की बात करें, फाइनेंसिंग की बात करें, सो यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यू आर अर्निंग द मनी, आपके पैसे आपके पापा के अकाउंट में आ रहे हैं एंड यू आर गेटिंग द मनी, दैट्स इट। like they like that's the main thing we care about in the initial like in the starting days of our करियर, और उसके हम फिर जितने आगे जाते हैं सो ये बाकी चीज़ें फिर बाद में, तब तक इंशाल्लाह मैंने कहा टेंशन नॉट, तब तक आप 18 साल के हो जाओगे, उसके बाद आप अपने नाम से जितने भी काम करवाने हैं वो कर लेंगे। हिलाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया, अपने अपना टाइम निकाला और हमें आज बहुत कुछ माशाल्लाह से आपसे सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Welcome. Thanks for having me. See you in the next session. Thank you. Goodbye. अल्लाह हाफिज।